हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे रिव्यू ऑफ प्रीवियस सेशन, देन क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड्स, voids in solids, determination of formula of the compound, packing efficiency and calculation of density of the unit cell. In previous sections we have seen characteristics of solids, classification of solids, that is crystalline and amorphous, then classification of crystalline solids, that is molecular, ionic, metallic and covalent solids. Crystal lattice and lattice points we have discussed. Unit cells are of two types, that is primitive and centered unit cells. Centered unit cells are further classified into three types, that is BCC, body centered cubic unit cell, face centered cubic unit cell and end centered cubic unit cell. Previous lattices are of 14 types and crystal systems are of 7 types. Number of atoms per unit cell we have discussed in the last session, that in simple cubic unit cell 1 atom per unit cell, in BCC 2 atoms per unit cell and in FCC and HCP 4 atoms per unit cell. Then closed packing in solids. What do you mean by closed packing in solids? The constituent particles in solids are closed packed when leaving minimum vacant space. मतलब जब वैकेंट स्पेस मिनिमम हो यानी मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हो सॉलिड्स, तभी हमारा क्या कहलाता है, वो क्लोज पैकिंग कहलाता है। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर हमने इतना अच्छे से पैकिंग दिखाया है जिसमें कि आपको मिनिमम स्पेसेस वैकेंट है, इन्हें हम लोग क्लोज पैकिंग कहते हैं। द पैकिंग पैटर्न फॉलोज इन 1 dimension, 2 dimension as well as in 3 dimension. We are going to see one by one in detail. Then next point is coordination number. The number of neighboring spheres to a given sphere or to a particular sphere is known as coordination number. जैसे एक particular sphere है या particular constituent particle है, उसको कितने नियरिंग नेबर स्फेयर हैं वो टच कर रहे हैं, उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी इन 1 dimension. In 1 dimension close packing arrangement, each sphere is in contact with 2 of its neighbors. जब हम लोग स्फेयर को एकदम क्लोज में रखते जाएं 1 dimension में, एक लाइन में, उसी को हम लोग क्लोज पैकिंग इन 1 dimension कहते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। जैसे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पार्टिकल को हमने सिंगल लाइन में टच करते हुए रख दिया, इससे अधिक आप क्लोज पैकिंग नहीं कर सकते। सो दिस इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 1 dimension. Then next one is close packing in 2 dimension. Close packing in 2 dimension is of 2 types. First one is square packing and second one is hexagonal packing. तो square packing में देखिए, यहाँ here particles are aligned together vertically as well as horizontally and centers of spheres are in a straight line. जैसे आप देखिए डायग्राम में कि हमने एकदम बिल्कुल हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन में हमारे पार्टिकल से अलाइंड है और उनका सेंटर बिल्कुल एक लाइन में फॉल कर रहा है। अगर आप एक पार्टिकल को लीजिए, एक पार्टिकल को, तो नियरेस्ट नेबर से कितना जुड़ा हुआ है, 4 से, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हुआ, 4। और इसके चारों आसपास वाले पार्टिकल का आप सेंटर लेकर ज्वाइन कीजिए तो आपको स्क्वायर स्ट्रक्चर मिल रहा है। अतः इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D कहते हैं, इन स्क्वायर पैकिंग इन 2 dimensional स्ट्रक्चर। और इसमें देखिए हर लेयर एक ही जैसा दिख रहा है, हर लेयर एक ही जैसा दिख रहा है, ए टाइप का दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसे ए पैकिंग इन 2 dimension भी कहते हैं। देन नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल पैकिंग. हेक्सागोनल पैकिंग when second row is placed in the depressions of spheres adjacent to first layer. जैसे पहला लेयर है, पहले लेयर के डिप्रेशन में हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को रखते जा रहे हैं, उनके डिप्रेशन में रखते जाएं। जब ऊपर वाला लेयर है उसके नीचे वाले जो डिप्रेशन है उसके बीच में पार्टिकल को रखते जाइए, तो इस तरह से हमें मिलता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और आप देखिए किसी एक पार्टिकल से आप देखिए कि उससे नियरेस्ट नेबर में कितने टच कर रहे हैं, तो 6 टच कर रहे हैं, और उन 6 का सेंटर आप क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए आपस में, तो आपको हेक्सागोनल रिंग मिल रहा है। सो इट इज़ नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिकॉज व्हेन वी आर taking all coordination number spheres centers and joining them together, then we are getting hexagonal ring like structure. So it is known as hexagonal close packing in 2 dimension. यहाँ पर देखें आप तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर डिफरेंट है, लेकिन थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच कर रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो है आपका सेकंड लेयर
फोर्थ लेयर से मैच कर रहा है, फोर्थ लेयर से मैच कर रहा है. सो इट इज AB टाइप ऑफ पैकिंग इन 2D. हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. आपने अभी अभी देखा कि यहाँ पर जो हमारा पार्टिकल है, एक पार्टिकल, गिवन पार्टिकल, जैसे यहाँ पर हमने लिया एक पार्टिकल, वो कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, 6 पार्टिकल को. सो इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6. देन प्लेसिंग ऑफ सेकंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर. When second layer of spheres is placed in the depressions in the first layer of hexagonal packing, two types of voids are generated. जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर देखें, जो पहले लेयर का डिप्रेशन है उसके ऊपर वाले voids हैं, उस पर अगर हम पार्टिकल रखें तो दो टाइप का हमें voids जनरेट होते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids. पहले लेयर के डिप्रेशन पर हम लोग जो voids क्रिएट हुए हैं वहाँ पर पार्टिकल रख रहे हैं, तो दो टाइप का हमें void मिल रहा है, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. सो वी विल सी इट इन डिटेल. द वैकेंट स्पेसेस सराउंडेड बाय द स्फीयर्स इन द सॉलिड्स इज नोन एज voids और गैप्स और इंटरस्टिसेस. इन्हें इंटरस्टिसेस भी हम लोग कहते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर हमारे 3 voids पहले लेयर के हैं, 1 2 3, और उसके ऊपर जो हमने चौथा पार्टिकल रख दिया, तो ये 4 पार्टिकल के बीच में जो void क्रिएट हुआ उसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल void. यहाँ पर भी देखिए 3 पार्टिकल हैं और ऊपर से एक रख दिया, तो उनके बीच में जो void क्रिएट हुआ उसे हम लोग टेट्राहेड्रल void कहते हैं. और टेट्राहेड्रल void को हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले टेट्राहेड्रल void के लिए 3 पार्टिकल का हमने सेंटर ले लिया, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, और एक पार्टिकल जो हमारा होता है ये ऊपर होता है, यहाँ पर जैसे ऊपर में होता है, तो ऊपर वाले के लिए हम बीच में ले लेते हैं और इनको भी हमने ज्वाइन कर दिया आपस में. सो दिस इज टेट्राहेड्रल void. दिस इज टेट्राहेड्रल void विच इज रिप्रेजेंटेड हियर. तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल void हुआ. अब नेक्स्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल void. तो ऑक्टाहेड्रल void देखिए, ऑक्टाहेड्रल void 6 पार्टिकल से बनता है. 3 पार्टिकल फर्स्ट लेयर में जो रेड सर्कल से दिखाए गए हैं, और जो ब्लू सर्कल है वो आपको सेकंड लेयर का है. तो देखिए दोनों का void एक ही जगह फॉल कर रहा है, और ये void जो बना 6 पार्टिकल के वजह से बना, इसे हम लोग ऑक्टाहेड्रल void कहते हैं. ऑक्टाहेड्रल void हम लोग कैसे बनाते हैं डायग्रामेटिक वे में, तो हम सबसे पहले 4 पार्टिकल ले लिए, उनका सेंटर ले लिए और हमने इसे ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन करने के बाद एक पार्टिकल हमने ऊपर ले लिया, इनको चारों सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, चारों सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए. इसी तरह एक और यहाँ ले लीजिए, इनको फिर आप चारों सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, चारों सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए. तो इस तरह से आपको एक मिल गया ऑक्टाहेड्रल void, और ये ऑक्टाहेड्रल void आपको डायग्रामेटिक वे में यहाँ पर दिखाया गया है. सो tetrahedral holes are surrounded by 4 spheres and octahedral holes are surrounded by 6 holes. Number of voids in a unit cell. See here, if number of particles in a closed packed sphere unit cell is equal to n, then number of tetrahedral voids will be equal to 2n, and octahedral voids will be equal to n. So we are going to take an example here. Question problem. Atoms of element B forms HCP lattice, and those of elements A occupy two-third of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by the element A and B? See, since B forms HCP lattice, so we know that in CCP and HCP number of atoms per unit cell is equal to 4. So B will be equal to 4 because it is forming HCP lattice. तो B की संख्या कितनी हो गई, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये HCP लैटिस बना रहा है. अब यहाँ टेट्राहेड्रल void कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल void होते हैं. तो यहाँ 4 पार्टिकल हैं पर यूनिट सेल, तो टेट्राहेड्रल void कितने होंगे, 8. अब देखिए कहता है कि हमारा A क्या करता है, A ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids. तो हमारे टेट्राहेड्रल voids A कहता है कि हमारा कितना ऑक्यूपाई करता है, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल voids. तो 2/3 हम किसके ले लेंगे, 8 के. तो हमारे O क्या दे देगा, A की संख्या दे देगा. तो हमारा A कितना हो गया, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल voids, दैट इज इक्वल टू
2/3 इंटू 8 इक्वल टू 16/3। अब हमें फॉर्मूला के लिए क्या लेना है, A:B से ये कंपाउंड बना है, तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो लेंगे नंबर ऑफ A पार्टिकल्स इज टू नंबर ऑफ B पार्टिकल्स। तो A की पार्टिकल की संख्या कितना है, 16/3, तो 16/3 ले लिया। और यहाँ इसका B का कितना है, 4, तो 4 ले लिया। तो रेशियो 16/3 इज टू 4 लेंगे, तो ये रेशियो कट करके आ जाएगा 4:3। मतलब A की संख्या पहले जो है 4, अब B की संख्या जो बाद में है 3। तो यहाँ फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A4 and B3। सो फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज A4B3। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी वन वीडियो फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन द सॉलिड्स। The face-centered cubic lattice contains 8 atoms at the 8 corners of a cube and 6 additional atoms in the faces of the cube. Although the face-centered cubic lattice is often drawn to emphasize the cubic nature of the structure, it is also a close-packed structure. The face-centered cubic results from the stacking of close-packed layers in an ABC fashion, so that the fourth layer lies over the first layer, the fifth layer lies over the second layer, and so on. Here we use color to represent the 3 close-packed layers in the face-centered cubic lattice. Two types of spaces or holes exist between the layers of close-packed structures. The first type of hole is called an octahedral hole and is formed between 3 atoms in one close-packed layer and 3 atoms in a second close-packed layer immediately above or below the first. The space at the center of a face-centered cubic is actually an octahedral hole and is formed by 3 atoms in the green close-packed layer and 3 atoms in the blue close-packed layer. In all subsequent discussions, we will represent octahedral holes with partially transparent polyhedra as shown here. Despite the name, it takes 6 atoms, not 8, to define an octahedron. The term octahedron is derived from the fact that such a polyhedron has 8 sides. The center octahedral hole is the only one that lies entirely inside the cell shown here. Other octahedral holes lie partially inside this cell. The center octahedral hole shares each of its 12 edges with 12 other octahedral holes. 8 of these are shown here. Each of these lies 1/4 inside the cell. Overall, an array of n atoms in a close-packed structure actually gives rise to n octahedral holes. The second type of hole that exists between the layers of close-packed structures is called a tetrahedral hole. Tetrahedral holes are formed between 3 atoms in one close-packed layer and a single atom in a second close-packed layer immediately above or below the first. As before, we will switch to transparent polyhedra to represent the tetrahedral holes in our face-centered cubic lattice. The cell shown here contains 8 tetrahedral holes at the 8 corners of the cube, and these lie entirely inside the cell. An array of n atoms in a close-packed structure gives 2n tetrahedral holes. Several different ionic lattices adopt structures in which one set of ions form a face-centered cubic array and the other set of ions occupies the octahedral or tetrahedral holes. In the following sections, we will discuss 3 ionic structures that can be described in this way. Halite is the mineral name for sodium chloride. In the halite structure,
the relatively large chloride ions, represented by the green spheres, form a face-centered cubic array. The sodium ions, represented by the white spheres, occupy the octahedral holes. Each sodium ion lies at the center of an octahedron of chloride ions. Since an array of n close-packed atoms give n octahedral holes, and since there is one sodium ion for every one chloride ion, all of the octahedral holes are occupied. In contrast, the tetrahedral holes are vacant. We can gain a different perspective on this structure by examining a space-filling model. The structure is based on a face-centered cubic array of chloride ions and therefore contains close-packed layers of chloride ions. By removing successive layers, we see that the sodium ions as well as the chloride ions form close-packed layers. The structure can therefore be described as alternating close-packed layers of sodium and chloride ions. A second ionic structure that is based upon a face-centered cubic lattice is the fluoride structure. Fluoride is the mineral calcium fluoride. In the fluoride structure, the calcium ions, represented here by the white spheres, form a face-centered cubic array. The fluoride ions, represented by the green spheres, occupy the tetrahedral holes. Each fluoride ion lies at the center of a tetrahedron of calcium ions. Since an array of n close-packed ions gives 2n tetrahedral holes, and since there are 2 fluoride ions for every 1 calcium ion, all of the tetrahedral holes are filled. Last, let us examine a space-filling model of the fluoride structure. The space-filling model shows us that the array of calcium ions is greatly expanded to accommodate the fluoride ions. The primary reason for the adoption of this arrangement is stoichiometry. A third ionic structure based upon a face-centered cubic lattice is the sphalerite structure. Sphalerite is the cubic form of the mineral zinc sulfide. In the sphalerite structure, the relatively large sulfide ions, represented here by the yellow spheres, form a face-centered cubic array. The zinc ions occupy the tetrahedral holes. Each zinc ion lies at the center of a tetrahedron of sulfide ions. However, since an array of n close-packed ions gives 2n tetrahedral holes, and since there is one zinc ion for every sulfide ion, only half of the tetrahedral holes are filled. Last, let us examine a space-filling model of this structure. This model shows us that the sulfide ions are quite large in relation to the zinc ions. As a result, the zinc ions almost fit entirely inside of the tetrahedral holes, with only a small expansion of the sulfide lattice. Let's take a moment to review. The halide or sodium chloride structure can be viewed as a close-packed array of chloride ions with the sodium ions in all of the octahedral holes. The fluoride or calcium fluoride structure can be viewed as a close-packed array of calcium ions with the fluoride ions in all of the tetrahedral holes. Last, the sphalerite or zinc sulfide structure can be viewed as a cubic, close-packed array of sulfide ions with the zinc ions in half of the tetrahedral holes.
Next one is close packing in 3 dimension, that is A type of packing. तो 3 डायमेंशन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2D में जो हमें स्क्वायर लेयर मिले थे उसी से हम 3 डायमेंशन में पैकिंग का समझते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर स्फेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर जस्ट प्लेस्ड एबव द फर्स्ट लेयर एंड सो ऑन. जैसे हमारा 1 डायमेंशन में जो लेयर मिले हुए थे स्क्वायर पैकिंग, उसी को हम लेयर बाय लेयर हेड ऑन रखते गए जिससे कि फिर सेंटर उनके क्या आ जाए, एक लाइन में फॉल करें. तो इनको देखिए, अगर हम लोग 8 पार्टिकल को लिया जाए तो हमें एक सिंपल क्यूब मिल रहा है. तो इस तरह से, और हर लेयर एक ही टाइप के मिल रहे हैं, हर लेयर एक ही टाइप के हैं. तो यहाँ पर कैसा हो गया, ए टाइप ऑफ पैकिंग हो गया. और यहाँ पर सिंपल क्यूबिक हमें लैटिस मिला. और यूनिट सेल, इसे किस टाइप का हम कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं. फॉर एग्जांपल पोलोनियम इज एग्जांपल ऑफ दिस क्लास. देन नेक्स्ट वन इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ हेक्सागोनल पैक्ड लेयर्स. हेक्सागोनल पैक्ड लेयर के पहले लेयर के ऊपर हम जब पार्टिकल रखते हैं तो हमने देखा था 2 टाइप के वॉइड्स हमें मिलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. अब हम क्या करते हैं, जब 3rd लेयर की हम लोग पैकिंग करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को हम लोग ऑक्यूपाई करने का प्रयास करते हैं. तो जब 3rd लेयर पर, यहाँ ध्यान दीजिए, पहले लेयर को हमने डिप्रेशन में रखते गए तो हमें हेक्सागोन मिला, हेक्सागोनल लेयर मिला. जैसे ये हो गया हेक्सागोनल लेयर. अब हम सेकेंड लेयर पर क्या करते हैं, पार्टिकल डिप्रेशन में रखते गए तो 2 टाइप के लेयर हमको वॉइड्स मिले, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. जब नेक्स्ट लेयर में हम सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, फिल करते हैं पार्टिकल से, तो हमें ए बी टाइप ऑफ लेयर मिलता है. मतलब पहला लेयर और 3rd लेयर सेम होगा, सेकंड और 4th लेयर सेम होगा. इस तरह से हमें कौन सा पैकिंग मिला, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग. एंड दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. अ नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसमें कितना होता है, 4, जितना कि सीसीपी में होता है, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट वन इज, जब हम लोग पिछले क्लास में, पिछले टाइप में हमने देखा था टेट्राहेड्रल वॉइड को 3rd लेयर में पैक किया था. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पैक करते हैं. तो जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पैक करेंगे तो देखिए क्या मिला हमें, 3rd लेयर क्या होता है, डिफरेंट आ जाता है. मतलब हमारा पहला लेयर और चौथा लेयर सेम होगा, फिर दूसरा और 5वां लेयर सेम होगा, फिर आपको तीसरा और 6वां लेयर सेम होगा. मतलब हर चौथा लेयर जा करके सिमिलर आएगा. इस टाइप के पैकिंग को हम लोग ए बी सी टाइप ऑफ पैकिंग कहते हैं या सीसीपी कहते हैं. और सीसीपी लैटिस आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीसीपी लैटिस आप देखें तो हर चौथा लेयर एक दूसरे से सेम आ रहा है और इसे हम लोग सीसीपी कहते हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12 होगा. और इसके साथ साथ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, 4 होंगे, जैसा कि हम लोग देखे हैं. अब इसके लिए भी हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए, ये पैकिंग सीक्वेंस के लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं. Solids differ from the other states of matter in that they have long range order. To achieve long range order, all the constituent particles need to be arranged in a symmetrical pattern in 3 dimensions. We will extend our knowledge of close packing in 2 dimensions to build symmetrical patterns in 3 dimensions. Let's first study 3-dimensional close packing from 2-dimensional square close packing. In order to build a 3-dimensional structure, it is easier to stack 2-dimensional square close packed planes one above the other. As you can see, the spheres are aligned horizontally as well as vertically. If the arrangement of spheres in the first layer is considered to be of A type, then the arrangement of spheres in the subsequent layers is also of A type. This 3-dimensional arrangement is referred to as AAA type packing. If you look carefully, you will find that this arrangement has resulted in the formation of a simple cubic lattice. The unit cell of this lattice is a primitive cubic unit cell.
Another way to build a three-dimensional close packing is from a two-dimensional hexagonal close packing. As you can see, the depressions of the first layer are the ideal seats for the next layer of spheres. By placing the constituent particles or the spheres in the depressions of the first layer, a second plane of closed packed spheres lying on the first plane is generated. It is important to note that when the spheres are placed on the voids of B-type in the first layer, the C-type voids are left unoccupied as no sphere can be placed in them. As the spheres of the two layers are aligned differently, let the arrangement of spheres in the first layer be referred to as A-type and in the second layer as B-type. A closer look at the arrangement indicates the formation of two different kinds of voids, marked as O and T. If you look carefully, you will find that this arrangement has resulted in the formation of a simple cubic lattice. The unit cell of this lattice is a primitive cubic unit cell. Another way to build a three-dimensional close packing is from a two-dimensional hexagonal close packing. As you can see, the depressions of the first layer are the ideal seats for the next layer of spheres. By placing the constituent particles or the spheres in the depressions of the first layer, a second plane of closed packed spheres lying on the first plane is generated. It is important to note that when the spheres are placed on the voids of B-type in the first layer, the C-type voids are left unoccupied as no sphere can be placed in them. As the spheres of the two layers are aligned differently, let the arrangement of spheres in the first layer be referred to as A-type and in the second layer as B-type. A closer look at the arrangement indicates the formation of two different kinds of voids, marked as O and T. It is also called cubic close packing, CCP, or face-centered close packing, FCC. Metals like iron, copper, and silver crystallize in CCP structures. Further, as can be seen in hexagonal close packing and cubic close packing, a sphere has the coordination number 12. It is in contact with 6 spheres in its own layer, 3 more in the layer above, and 3 more in the layer below. Also, both the forms hexagonal close packing and cubic close packing are equally efficient in terms of filling up space. In both of them, 74% of the space in the crystal is filled up. Let us now look at the number of tetrahedral and octahedral voids present in these arrangements. In a close-packed structure, whether CCP or 8CP, if there are n spheres in the packing per unit cell, then the number of octahedral voids is the same as n, while the number of tetrahedral voids is equal to 2n. For example, in a CCP arrangement, if
4 atoms or ions are present per unit cell, then the number of octahedral voids is also 4, while the number of tetrahedral voids is 8. We are going to see here that how to determine the formula of the compound. We have seen one example. We are going to see another example here. A cubic solid is made up of two elements x and y. Atoms y are at the corners of the cube and x atoms are at the body center. What is the formula of the compound? अब देखिए बॉडी सेंटर पर है, वो तो पता है कि जो बॉडी सेंटर पर है वो पूरी की पूरी पार्टिकल क्या होगी, उस यूनिट सेल में होगी. तो x की संख्या कितनी हो गई, ये बॉडी सेंटर पर है तो x का संख्या कितना हो जाएगा आपको डायरेक्टली 1 पर यूनिट सेल. नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ वाई एटम्स, ये कॉर्नर पर है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8. तो x की संख्या 1 हो गया और y की संख्या 1 हो गई. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया x1 y1, मतलब 1 1 लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं है. सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज xy. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज हियर. A cubic solid is made up of two types of elements x and y. Atoms y as anions at the corners of the cube. देखिए ध्यान दीजिए, जनरली एनायंस कॉर्नर पर होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन जनरली. अब देखिए x cations are present at the face centers of the cubic lattice. What is the formula of the compound? देखिए अब x as anion कहाँ है, कॉर्नर्स पर है. तो कॉर्नर कितने होते हैं 8 और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8. तो कॉर्नर से कितना हो गया हमारे पार्टिकल, यहाँ पर देखें तो कॉर्नर पर हमारे पार्टिकल हो गया कितना 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1. और हमारा एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है हाफ, तो हम हाफ का कर देंगे हाफ इंटू 6 फेसेस होते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 3. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा x कितना हो गया 3 और y हो गया 1. सो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज x3 y1. नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम. अब देखिए सिंपल क्यूब में यहाँ पर क्या है हमारे, तो एक एज लेंथ में हमारा 2 एटम का रेडियस फॉल कर रहा है. सो a इज इक्वल टू 2r. इसी तरह एफसीसी में देखिए तो एफसीसी में यहाँ हमारा फेस सेंटर पर पार्टिकल टच करते हैं एक दूसरे को. तो फेस सेंटर पर देखिए तो किसी सरफेस का हर फेस क्या है यहाँ पर स्क्वायर का शेप में है. तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, एज लेंथ का क्या होता है, एज लेंथ अगर a है तो उसका कितना हो जाएगा √2a. और यहाँ पर देखिए पार्टिकल कितना हमारे हो गए, रेडियस अगर काउंट करें तो एक के लिए मिडिल वाले के लिए 2r और किनारे किनारे के लिए r. तो √2a बराबर 4r. सो a इज इक्वल टू हाउ मच 4r बाई √2. तो इस तरह से हमें कितना मिल गया, एज लेंथ कितना हो गया 2√2r. इसी तरह से नेक्स्ट वन अगर आप देखें तो नेक्स्ट वन हमारा हो जाएगा BCC में देखिए अगर किसी क्यूब का एज लेंथ a है तो उसका बॉडी डायगोनल कितना होगा √3 है. और पीला वाले आपको पार्टिकल देख लीजिए बॉडी डायगोनल पर है तो ये 4r हो गया. तो 4r मतलब 4 रेडियाई हो गए. ये तीनों स्फेयर से बीच वाले के लिए 2r, किनारे किनारे के लिए r. तो इस तरह से √3a इज इक्वल टू 4r. तो √3a इक्वल टू 4r हुआ तो a बराबर कितना हो गया 4r√3. तो इस तरह से a और आप r के बीच में हर टाइप के लैटिस का आपको रिलेशन मिल गया. अब हम लोग देखेंगे आगे नेक्स्ट टाइप यहाँ पर पैकिंग इफिशियंसी. तो पैकिंग इफिशियंसी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल ऑक्युपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग इफिशियंसी. मतलब जितना वॉल्यूम स्क्वायर का है उसका कितना भाग एक्चुअल में स्फीयर मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ये ऑक्युपाई किया गया है, उसी को हम पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं. तो पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. ये हम देखें यहाँ. इसी तरह क्या है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. तो एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ और हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए. और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है a³. ए क्या है यहाँ एज लेंथ हो गया, आर क्या है रेडियस ऑफ द एटम है, एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. सो नेक्स्ट वन इज पैकिंग इफिशियंसी इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ देखिए एक एटम होता है पर यूनिट सेल. तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ और a हमारा कितना होता है यहाँ 2r. तो यहाँ वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा 8r³ हो जाएगा.
तो 4/3πRQ/8R³ इंटू 100, तो हमारा कितना आ जाएगा 52.4%। इसी तरह से नेक्स्ट वन देखिए, पैकिंग इफिशियंसी इन एफसीसी। एफसीसी में हमारे पार्टिकल कितना होता है 4, तो 4 इंटू 4/3πRQ, 4/3πRQ एक आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, और 4 क्या हो गया यहाँ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हो गए। और हमने इसके बाद ए क्यू के जगह पर हमने 2√2R लिख दिया, क्योंकि ए बराबर कितना होता है एफसीसी में 2√2R होता है। तो हमने ए के जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, तो सॉल्व कीजिए तो आपको मिला कितना, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू 74%, मतलब 74% हमारा वॉल्यूम वहाँ एक्चुअल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है। लेकिन यहाँ वॉइड्स के रूप में कितना रह गया, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के रूप में, तो 26%। इसी तरह यहाँ देखेंगे इस केस में 47.6% वॉइड्स के रूप में रह गया। नेक्स्ट वन इज पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बीसीसी में अगर हम देखें तो बीसीसी में हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं 2, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πRQ। सो 2 इंटू 4/3πRQ, और ए का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, ए का वैल्यू होता है 4/√3R। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हमने ले लिया और यहाँ पर हमने पुट कर दीजिए ए के जगह पर, ए क्यू के जगह पर, तो हमको हो गया कितना, ये अगर पैकिंग एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करें तो आ गया 68%, मतलब 68% यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। और यहाँ पर वॉइड्स कितने रह गए, तो वॉइड्स रह गया आपको 32%। नेक्स्ट वन इज कंपेरिजन हियर विच वी सीन हियर, जो आपको हमने अभी बताया कि यहाँ इतना सिंपल क्यूबिक में 52.4% पैक हुआ, तो वॉइड्स कितना हुआ 47.6। इसी तरह बीसीसी में 68% पैकिंग हुआ, तो 32% टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रूप में रह गया। और एफसीसी में 74% पैकिंग हुआ और 26% यहाँ वॉइड्स के रूप में खाली रह गया। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल एंड रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास एंड नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसके बीच में रिलेशन देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है ए क्यू, और मास ऑफ द यूनिट सेल कितना होता है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम ले लेंगे पर यूनिट सेल, और मास ऑफ ईच एटम ले लेंगे। तो जेड हम यहाँ ले लिए नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर एटम, और स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन एटम पर, मास ऑफ वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखिए, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक है उसका मास कितना होगा, मोलर मास बाई एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास कितना होता है, मोलर मास के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, एम बाई एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो इसको हमने रखा तो कितना हो गया, जेड इंटू स्मॉल एम बाई ए क्यू, और एक एम का वैल्यू कितना होता है, अभी अभी आपने देखा यहाँ कितना, कैपिटल एम बाई एन ए। सो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया, जेड एम अपॉन ए क्यू एन ए। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यू शुड प्रैक्टिस इट बिकॉज वेरी fabulous number of numericals are asked from here. Today we discussed about closed packing pattern in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension solids. Then next one, tetrahedral and octahedral voids, how to derive the formula of the compounds, packing efficiency, and last one, calculation of density of the unit cell. Now few questions for your homework. You should do it by yourself.